सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। आज फिलॉसफी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल वेल-बीइंग फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इंडियन नॉलेज सिस्टम के उपलक्ष्य में उपस्थित प्रस्तुत सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अनामिका गिरधर जी, प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र तथा डायरेक्टर जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती चेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जी का और उन्हीं के साथ प्रपत्रवाचक तथा उपस्थित सभी विद्वज्जनों एवं सुधीजनों का मैं डॉक्टर दीप्ति, विभागाध्यक्ष हिंदी, हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर अनामिका गिरधर जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। प्रोफेसर अनामिका गिरधर वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर और चेयरपर्सन के गरिमापूर्ण पद का कार्यभार संभाल रही हैं। मैं इनका विस्तृत परिचय संक्षिप्त शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैडम सहजता, ईमानदारी एवं विनम्रता की साकार रूप है। आप उज्जवल विचारों की धनी, साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण की स्वामिनी है। गत कई वर्षों से प्रोफेसर के रूप में आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर अनेक विद्यार्थियों ने अपना भविष्य संवारा है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में 31 वर्ष के अध्यापन काल के दौरान आपके मार्गदर्शन में 16 शोधार्थियों ने पीएचडी की तथा मैडम कई छात्रों का एमफिल में शोध मार्गदर्शन भी कर रही है। प्रोफेसर अनामिका गिरधर जी की 2 पुस्तकें प्रकाशित है और इसी के साथ आपके विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में 20 से अधिक आलेख उनकी विद्वता का बखूबी परिचय देने के साथ साथ प्रमाणित करते हैं कि आप नित नवाचार से सतत कार्यरत रहे। आप छात्रों को प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती रही हैं। आपका सादर अभिवादन मैम। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम हिंदू महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अब मैं पेपर प्रेजेंट करने वाले प्रतिभागियों को एक एक करके आमंत्रित करती हूँ आभासी पटल पर। मेरा सभी से निवेदन है कि प्रत्येक प्रतिभागी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट के अंदर अपने शोध पत्र को प्रस्तुत करें। अब मैं संगोष्ठी के प्रथम वक्ता के रूप में मिस आरती एम, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट जी को सादर अभिवादन के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे डीप इकोलॉजी एंड बुद्धिज्म टुवर्ड एन इंटरडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर विषय पर अपने बहुमूल्य विचार हम सभी के साथ साझा करें। मिस आरती जी। Hello, good afternoon to all. गुड आफ्टरनून। The title of my paper is Deep Ecology and Buddhism Toward an Interdependent Understanding of Nature. This paper explores the philosophical dialogue between deep ecology and Buddhism, showing how both traditions converge on the idea of interdependence of human and nature as the foundation for ecological awareness. So the deep ecology of NIS challenges the human-centered view that treats nature as a resource, emphasizing instead the intrinsic value of all being and the interdependence of life. Unlike shallow ecology, which offer technical fixing for human benefits, deep ecology called for a deeper transformation of our relationship with nature. Central to this vision is ecosophy, a personal philosophy of living in harmony with the ecosphere, shaped by the holistic thinking and the idea of self-realization beyond the ego and the rejection of human and nature dualism. The theme, interdependence, stand at the heart of both NIS deep ecology and Buddhism, while NIS developed it through the notion of gestalt and ecological self-realization. Buddhism articulates it through the doctrine like dependent origination, non-self, and impermanence. Together, they present a worldview in which all beings and processes are relational, co-arising, and mutually sustaining. The theme interdependence, first I talk about the NIS use of the gestalt. In the theme interdependence, first I talk about the gestalt thinking and relational perception. So NIS use of gestalt thinking illustrates how we perceive the world as relational wholes rather than as disconnected fragments. A gestalt is not merely the sum of all its parts, it's a living, dynamic configuration. For example, a forest is not just trees or soil, an animal considered separately. It is experienced as a living community.
a relational field where each element gains meaning from the others. Gestalt is not a static. It evolved with the context, embodiment, and time. A mountain can appear sublime, threatening, or nurturing, depending on one's stance and experiences. This fluidity shows that meaning emerged not from isolated objects, but from their interrelation within the whole. Ethical awareness arises precisely from such gestalt experiences. For instance, perceiving a river not as a timber or a resources, but as a living process inseparable from human and non-human life. Buddhism articulates the same truth through dependent origination. All things arise because of the cause and condition, and nothing exists independently. This principle denies any permanent essence in a being, affirming instead that reality is a web of a relation. And the doctrine of a non-self complement this by rejecting the idea of a fixed, isolated ego. The self is not a separated, enduring entity, but is constituted through interaction with the other and environment. Unlike likewise, the concept of impermanence underscores that all being and the process are in constant flux. This Buddhist insight dismantled the rigid boundary between self and the world, revealing life as a dynamic interplay. And the idea of no permanent self is central in both Buddhism and Gestalt thinking. In Ney's version of a deep ecology, he uses self-realization as the highest principle, but this does not mean there is an eternal or unchanging self. Instead, the self here is only a symbol for identifying with the widest possible range of beings. What we call selves are not solid, permanent things. They are more like temporary notes or patterns that appear again and again within the flow of experience. In this sense, the terms like ego, self, and the self with capital S are not concrete realities, but mental concepts that help us think. The same applies to the term self-realization. Even though these words are just tools, they are still important. And to realize oneself, Nace uses the phrase is similar to the Buddhist idea of following the path. Each person must follow their own path because everyone has different experiences. Yet, if these paths are followed deeply, they lead to states that share something in common. In Buddhism, the ultimate goal is nirvana. However, nirvana is not explained in the same way as Hindu metaphysics. The Hindu idea of universal absolute Atman does not belong to Buddhism. When he speaks of realizing the greatest self, he do not mean realizing the Hindu Atman. According to Nace, the better Sanskrit phrase might be realizing Swamarga, which means realizing one's own way. So the greater self corresponds to maximum deepening and extending of the Swa through deepening and extending the process of identification. In any case, the great self is an ensuratio, not a concrete content or a set of concrete content, but it is still unclear if such a concept can even be defined without it. And the interdependence is not merely an abstract idea, it is encountered directly in lived experience. Zen poetry and haiku often capture this insight. For instance, Bashu's famous verses, All Pond or a frog jumping or the sound of water expresses an indivisible unity. The poet, the frog, and the pond and the sound are not separate objects but are part of single happening. This gestalt even cannot be reduced to inner feelings or external facts. So it reveals the inseparability of the self and the world. Similarly, spontaneous encounter with nature, like listening to the flow of a river or watching a bird in a flight, dissolve the artificial split between the observer and the observed. These moments of direct experience reflect the deep ecological and Buddhist insight that reality is fundamentally relational. So the interdependence has profound ethical consequences. If being is relationally constituted, then the value of nature cannot be reduced to human utility. Instead, every entity possesses intrinsic value by virtue of being part of the larger whole. From Buddhism, this translated into ethical principles like ahimsa, karuna, and metta.
From deep ecology, it translated into respect for all being, whether animate or inanimate. Both perspectives converge on the view that to harm other being is ultimately to harm oneself, since self and other are inseparable within the web of life. Concluding, deep ecology challenges the anthropocentrism by introducing ecosophy, gestalt experience, and self-realization, all of which highlight the interconnection of human and nature. These argue that ecological concerns arise when the self expands to include the ecosphere, recognizing intrinsic value in all being rather than treating them as resources for human use. Buddhism reinforces this vision through its teaching on dependent origination, non-self, and impermanence, which dismantle the illusion of a fixed independent self, reveal that all being exists only in relation, and the Gestalt experience bridges the two perspectives, illustrating how meaning arises from the whole rather than isolated parts. So, spontaneous encounter with nature, as expressed in the Zen poetry, disclose the inseparability of subject and object, self and the world. Together, deep ecology and Buddhism offer more than a theoretical framework. They point to a transformative way of life by cultivating ecological consciousness grounded in interdependence. Human can nurture a sustainable and compassionate relationship with the natural world. Thank you. धन्यवाद। आपने प्रस्तुत विषय के अलग अलग आयामों से संबंधित यथार्थ और बहुउपयोगी जानकारियों से बहुत ही सहजता से हमें अवगत करवाया। अब मैं दूसरे प्रतिभागी मिस्टर प्रफुल्ल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मिस्टर प्रफुल्ल उड़ीसा के भुवनेश्वर के KISS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में रिसर्च स्कॉलर हैं। सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ महिमा धर्म इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मिस्टर प्रफुल्ल। मिस्टर प्रफुल्ल, क्या आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं? लगता है कि वो हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं अगली प्रतिभागी डॉक्टर कल्याणी सारंगी जी को आत्मीय निवेदन करती हूँ। डॉक्टर कल्याणी उड़ीसा के भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मैन, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सप्लोरिंग द इंडियन ट्रेडिशन विषय पर हमारे साथ विचार साझा करें। डॉक्टर कल्याणी जी। Yeah, I'm here. I'm joining. Dr. Kalyani? Yes, madam. I'm here. I'm joining. I'm sharing my screen. Okay. Just allow. Okay, ma'am. My screen is visible to all of you? जी। Okay. Thank you so much. Shall I start? ma'am? जी मैम, बिल्कुल। Okay. जी मैम। Namaskar to all of you. Am I audible? जी मैम। Yes, you are audible. Namaskar to all of you. Thank you, madam, for giving me the introduction, of myself. I am Dr. Kalyani from Ramadevi Women's University, Bhubaneswar, Odisha. And I'm first of all, I'm thankful to each one of you for giving me this opportunity. The title of my presentation is Man, Environment and Sustainability, Exploring Indian Traditions. Let me begin with some background. So, man, influenced by the Baconian injunction, knowledge is power, attempts to explore every part of the nature and thinks himself to be the crown of the creation. This anthropocentric vision of man
trying to control and regulate nature, ignoring the thumb rule that nature has its own mechanism of maintaining beauty, integrity, and stability of its own, invites more challenges than opportunities. As a consequence, we see there are many challenges like global warming, shrinking of glaciers, destruction of ecosystems, deforestation, loss of biodiversity, extinction of certain species, creation of deserts, heat waves, and spread of more number of diseases and many more. So environmental scientists, ethicists, and social activists, they shout out that sustainability is the only remedy for this global malady. So we can, to find out a solution, we can go back to find out a solution, we have certain Indian traditional scriptures, Indian traditions where we are, if we deep dive into it, we can find certain solutions. So let me begin with the Vedic and Upanishadic ideas that tells us about the interconnectedness and the interdependence. Nowadays, we are talking about the butterfly effect. If one part of the globe gets disturbed, the other parts of the globe automatically they get disturbed. So there is that indicates that every part is connected with the other part. The same thing you see that is told in our Vedic concept of Rita, that is the cosmic order. So there is the order that regulates everywhere, including the human conduct also. So even in the Upanishadic injunction, Ishavashyam Idam Sarvam, that we say that everything is pervaded by that divine force. So nature is sacralized, you can say, without being defined as separate. It is not something isolated. It is not something we can deal in isolation of ourselves. So we have to again, so for that we have to again go back to the first verse of Isha Upanishad, which tells us that Tena Tyaktana Bunjita. That means actual happiness, our actual well-being lies by sacrificing, by seeing the well-being of others, by seeing others in ourselves. Similarly, in the Bhumi Sukta, that is the part of the third Veda, in the Bhumi Sukta part, it is also said that the mother is the earth. That she is in, there are many descriptions like she is named as Vishwambara, she is the bearing of everything. She is Vasudha, that is the producer of all wealth, all metals, and Hiranyavaksha, she is the sustainer of all possible life forms. So this metaphysics gives a sufficient ethics that our actual enjoyment, our actual happiness, and our well-being is legitimate when tempered by self-restraint, a precursor to contemporary ideas of consumption gaps and degrowth within the high-income context, and an ethical paradigm of live and let live. So we have to believe in the credo that we not only live, we allow others to live. Because recently, in the recent past, we have seen the corona pandemic case and how a small virus that crippled the whole globe, that teaches us a lot of lessons. So from that, at least we should understand that we have to practice the ethics of live and let live. So there are, it is not the thing that in only in the Vedic tradition we do talk of environmental ethics. It is not like that. Even in the contemporary time, so all you can talk about the Indian philosophical traditions where there is Jainism, Buddhism, in Jaina and Buddha ethics also we do talk of non-violence and ahimsa. Even in Jainism, you see one step ahead, that is Jibe Daya, and that too ahimsa is to be practiced. Manas ahimsa, they give importance on manas ahimsa. That is the, even you cannot think ill of others because there is a psychic wavelength also. So even the in the Buddha always advocated us for the for middle path. So we should not believe in absolute consumptions. Even we should not believe in
the zero consumption, because if we do believe in absolute consumption, then we do talk of only development. If we do believe in zero consumption, then that will lead to zero development. So we have to find out, just in the language of Buddha, we have to find out a middle path, and that middle path will emerge as sustainable development. So there are different two thinking that in our mind there are different movements. I have cited here one only for my presentation, that is the Chipko movement, and I hope all our hour of that Chipko movement, by that we want to try to bring certain changes in that, and for that to simply by theoretical preachings, teachings, not at all it is going to help us. We have to follow certain stringent policies and practices, so that we must have certain sustainable agenda. And in the first agenda, I can say there is embedded sufficiency and duty. It is a duty based agenda. It should be a duty based agenda, and we have to recognize the resource community, and we have to take a stewardship, because we claim ourselves as the crown of the creation. We are the highest intelligent creator, so we have moral duties, you can say, that is described as moral responsibility. So we always try to find out, if at all there is certain problem, we try to find out a nature based solution for the environmental issues. And there must be the different cultures, they must develop some cultural policies and educational practices, and we do talk of green jurisprudence and compliance. So I think that will be enough to think of a brighter and to think of a greener future, you can say. Then only we can talk of the Vasudhaiva Kutumbakam, and we have one earth, one family, and one environment. Thank you. Thank you all for your patient hearing. Namaskar. धन्यवाद। मैडम, आपने विस्तार से आवश्यक बिंदुओं पर बड़ी सटीक और सारगर्भित ज्ञानवर्धक चर्चा की है। अब मैं संगोष्ठी के अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर दालिम जी, जो कि इंडिया के कंचारपरा कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं, मैं उनसे सादर अनुरोध करती हूँ कि वे इंडियन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एनवायरमेंटल केयर एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर हमारे साथ अपने अनमोल विचार साझा करें। डॉक्टर दालिम जी। Yes, ma'am. My name is Dalim Sheikh, Assistant Professor of Philosophy, Khatikan College, West Bengal, Kolkata. The title of my today's presentation, Indian Philosophical Perspectives on Environmental Care and Moral Responsibility. Okay. Environmental crisis is our global problem. Most of the people will agree that the excessive use of science and technology are the main cause of it, but it is not the only cause. Our modern lifestyle, losing moral values, and our careless attitude towards culture and tradition are also responsible for the degradation of nature. In India, philosophy and religion are interconnected. The chief objective of all this is the betterment and beautification of our practical lives. Our philosophy, ancient literature, religious scriptures clearly talk about the importance of the ecosystem. Many of us will say that in traditional Indian philosophy, we have not seen any discussion on environmental problems in a clear and systematic way. However, in ancient Indian texts like Puran, Bhagavad Gita, Upanishad, Ayurveda Shastra, Artha Shastra, we have some evidence about protecting nature and being aware of the environment. This is my message that I want to talk. Things like the sun, fire, wind, water, and trees were treated like gods. People gave offerings to them to show their respect. Indian philosophy talk about the Panchabhuta that make up the entire universe. We may note that most of the Indian thinkers hold that world is composed of 5 elements, that is Panchamahabhuta. They believe that not only non-living materials, but also living organisms are composed of 5 elements. The importance
of these elements is mentioned in our Indian texts, especially in the Mahabharata and other old scripture also. Just like a mother, our earth protects everything by giving us shelter on our surface. In some parts of the Rig Veda, the earth is even termed as goddess. It is also said that the earth protects the natural rule and cosmic law that keeps the world in order. Although ancient Greek philosophy mentioned some views on environment, but long before that, Indian scripture had already mentioned it. In the Vedas, water is considered the original element of the world. It is said that at the beginning of the universe, there was only water. The water covered everything. We have seen in some portion of Rig Veda Samhita that natural elements like water, rain, and clouds were given different names and were worshipped. People prayed to them so that they would make human life happy and comfortable. It assumed that the thoughts played behind this belief. Nature helps us in many ways, so it is our duty to handle with care. Nature has a kind of indirect value for humans. The relationship between humans and nature was based on giving and taking policy. It is also true that in those times, people feared the powers of nature and were amazed by their strength. This fear and wonder made people pray to keep these forces calm and kind. Later, in many texts, like the Purans, epics like the Mahabharata, the idea of protecting the environment also came from the belief that nature is valuable because they help us. Therefore, they come to conclusion that nature should be preserved. In the Upanishad, we find another kind of environmental thinking. According to the Upanishads, all living and non-living things are different forms of one reality, that is Atma. Humans and nature both are parts of the same soul. Kautilya Arthashastra contains many valuable guidelines on environmental conservation and the proper use of natural resources. The Arthashastra advises the king to take special care of water bodies and wildlife areas. In Arthashastra prescribed some specific punishment, hunting, tree cutting. The preservation of rivers, canals, ponds, and lakes is also strongly emphasized. Severe punishment are prescribed for crimes like water pollution and damaging dams. Now, conclusion. I come to my conclusion. India is now the third largest producer of greenhouse gas that causes global warming. Interestingly, the demand of energy keeps increasing. The weather is not normal like before. It has become very unstable these days. The natural patterns of nature are so longer seen. For example, floods were never heard of in Rajasthan before, but now floods are happening there. Nature is behaving abnormally and unusually. Behind this is the hand of humans. We have forced nature to react in this way. Although it is late, a silent change is being seen in India renewable energy sector. Solar and wind energy are no longer as expensive as before. They have become affordable across the entire country. Even the electricity office in the country are inviting application to use solar energy. People are being encouraged to install solar panels on their rooftops. Many are already installing solar panels at home. Residents can choose the energy sources of the future according to their preferences. It is encouraging to hear that India's new national electricity policy aims to produce 500 gigawatts of renewable energy between 2024 and 2032. We must welcome renewable energy to free ourselves from the clutches of coal. This renewable energy will not only reduce cost, but also create numerous new job opportunities and improve people's lung health. The incidence of infectious disease will decrease.
There is no end to worries about the environment pollution. In winter, our beloved capital city Delhi often does not see the sun for days on end. Daily life is disturbed by dense fog. Schools and colleges are forced to close, and office and court work is delayed. Therefore, instead of clinging to coal, we must increase our use of renewable energy. Currently, Gujarat obtains 22% of its total electricity from solar and wind power. Tamil Nadu 22% and Karnataka 37%. From the above discussion, it is clear that the environmental awareness in the Vedic era was primarily focused on the benefits and usefulness of the environment. If the various elements of the environment did not function properly, it would become impossible to sustain human life. However, at that time, humans had not yet acquired the power to control those elements. Thank you, madam. धन्यवाद। आपके व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत कॉन्फ्रेंस बहुत समृद्ध हुई है। आपके द्वारा प्रस्तुत जो प्रेरणास्पद तथ्य थे वो चिंतन मनन के निसंदेह अधिकारी हैं। अब मैं अगले पेपर प्रेजेंटर के रूप में डॉक्टर नीजरा मेदी जी को सादर अभिवादन के साथ आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नीजरा जी बोरेसवर कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर शोभायमान है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एथिकल फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विषय पर अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर नीजरा जी। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. I am here, ma'am. Are you here, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am. Good afternoon to everyone. Respected chairperson, respected convener, and all team of ICPR conference, and as well as all the present here. The title of my research paper is Ethical Foundation of Buddhist Ethics or Buddhist Philosophy. In my paper, this paper symbolizes an endeavor presenting Buddhist concept of ethics and its relevance in the contemporary time. The concept of non-violence is the worldwide tendency of which ultimate goal is the harmonious coexistence of all life forms in the universe. Non-violence is the central part of ethics in Buddhism. Morality is intertwined into the fabric of Buddhist teaching, and there is no major branch or school of Buddhism that fails to emphasize is the importance of the moral life. The scriptures of Buddhism in every language will express virtues such as non-violence and compassion, and the Buddhist version of the Golden Rule counsels us not to do anything to others we would not like to done to ourselves. The ultimate foundation for Buddhist ethics is Dharma. Dharma has many meanings, but the underlying notion is of a universal law which governs both the physical and moral order of the universe. Dharma can best be translated as natural law, a term that captures both its main senses, namely as the principle of order and regularity seen in the behavior of natural phenomena, and also the idea of a universal moral law whose requirements have been revealed by enlightenment beings such as the Buddha. In my paper, I explored that apart from the 5 precepts, various other lists of precepts are found, such as Eightfold Precepts, Astangam Sila, and the 10 Precepts, Dasa Sila. These are commonly adopted as additional commitments on the twice monthly holidays and supplement. The first 4 of the 5 precepts with additional restrictions, such as the time when meals may be taken. Another set of precepts similar to the 10 precepts is the 10 good paths of action, Dasa Kusala Karma Patha. Precepts like this, which apply to the laity, are comparatively few in number compared
to those observed by monks and nuns as explained below. One of the most important parts for lay Buddhists in particular is dana, which means giving or generosity. The primary recipient of lay Buddhist generosity is the Sangha, who since monks and nuns possesses nothing, they are entirely dependent upon the relatives for support. So compassion is a very virtue that is of importance in all schools of Buddhism, but it is particularly emphasized by the Mahayana. In early Buddhism. Karuna figures as the second of the four Brahma Viharas or divine embodiment. These are states of mind cultivated specially through the practice of meditation. The four are loving kindness, metta, compassion, karuna, sympathetic joy, mudita, and equanimity, upeksha. The practice of the four Brahma Viharas involves radiating to our outwards the positive qualities associated with which directing them first towards oneself, then to one's family, to family, the local community, and eventually to all beings in the universe. In Mahayana iconography and art, the symbolic embodiment of compassion is the great bodhisattva, the one who looks down from on high. The Buddhism stands for three pillars. The three pillars are Buddha, which means the founder, Dhamma means his teachings, and the Sangha means order of Buddhist monks and nuns. So a question arises that which philosophy do we find most logical take into consideration to Western and Indian both? From the perspective of logic, if we see, I find Advaita Vedanta to be very consistent, but if I see the logical applicability in present scenario, I find Buddhist ethics is very relevant into this. So the Buddha taught us that the main objective of our practice is to achieve this ultimate wisdom. The chief aim of Buddhist education is all-round development of children's personality. This includes his physical, mental, moral, intellectual development, etc. So the other aims of Buddhist education is Buddhist philosophy is are to be make a free man, a wise, intelligent, moral, non-violent, and secular man. The Buddha's teachings contain three major points: discipline, wisdom, and meditation. Wisdom is the goal, and deep meditation or concentration in the crucial process towards achieving wisdom. So I come to my conclusion. We might sum up the key points of this brief survey by saying that Buddhist moral teachings are thought to be grounded in the cosmic law of dharma rather than commandments handed down by God. Buddhism holds that the requirements of this law have been really revealed by enlightened teachers and can be understood by anyone who develops the necessary insight. Buddhist moral teachings emphasize self-discipline, generosity, non-violence, and compassion. The research paper has suggested that understand the nature of Buddhist ethics and has proposed a working classification of Buddhism as a form of virtue ethics. For the Buddhist mentor, we endeavor to lesson of the unatheistic judgment and encouragement of the human world. Buddha also thought that the peaceful minds lead to peaceful speech and peaceful actions. In addition, if the minds of living beings are at peace, the world will be at peace. Buddhist philosophy remains highly relevant today for providing practical solutions to modern problems and addressing issues like materialism, environmental degradation, and social inequality through teachings on mindfulness, compassion, and the middle
path. It focuses on self-discovery, ethical living, and interconnectedness of her a path to inner peace and social responsibility, making it a timeless guide for individual and society, seeking well-being and sustainable future. Thank you, ma'am. Thank you. धन्यवाद। आपने संगोष्ठी के प्रस्तुत विषय से संबंधित एक अलग ही एस्पेक्ट पर बहुत ही सहजता से नवीन जानकारियों से हमें अवगत करवाया। अब मैं अगले प्रेजेंटर के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सत्येंद्र उत्तराखंड के देहरादून में स्पर्श हिमालय यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ योगा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर शोभायमान है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल वेलबीइंग इन विदिकल सूक्त विषय पर हमारे साथ अपने अनमोल विचार साझा करें। डॉक्टर साहब प्लीज स्टार्ट करें। सर काइंडली अनम्यूट करें आप अपने आप को। Am I audible, ma'am? जी सर, अब आपकी आवाज आ गई है। Okay. Thank you. Thank you, Chairperson, ma'am, and organizing committee to give me this opportunity. My topic of the paper is sustainability and environmental well-being in Vedic Suktas. There is ample mention of environmental production in Vedas, although there was a complete absence of environmental pollution problem in Vedic era. The revolutionary Vedic sages still paid sufficient attention to it. The problem of chronic environmental pollution has been especially acute in India. The Vedic sages were already aware to the dire consequence of the problem. Therefore, the Vedic Samhitas and the Vedic literature, there are numerous references to solution to the severity of this problem. This problem. The problem of pollution began when man interfered with the polluted nature. Importantly, improperly the excessive. The biggest reason for the origin of this problem is excessive increasing of population. Due to increasing the population, urbanization of forest land, destruction of trees and forest, contamination of natural water resources, lack of oxygen, spread of filth everywhere, excessive smoking emission from modern means of transportation, and unchecked pollution of the climate by industries are many reasons for the environmental pollution in modern times. In the modern era, along with the pollution of environment, the problem of noise pollution is also increased to avoid all these type of pollution. Various type of remedies are shown in the Vedas. If we want to avoid the deadly grip of pollution, then we will have to adopt the remedies suggested by the Vedas. In the Vedic era, the production of environment, closeness of nature to nature, and the agreement to the Agnihotra in the house were essential for the welfare of human life. In the Vedas, various forms of nature have been considered deities. Worship of honor these forms of nature's immune defense. There is legislation: earth, water, air, sky, and light. Vegetation, mountain, and six seasons, etc. Almost all the forms of nature were
were accepted as the deities, and all them were worshipped. In such of the situation of the belief, it is not possible to harm, pollute, or destroy these form of natures. In there, never possible to pollute or harm the one who we worship or whom we consider a deity. There is also clear provision of the Vedas maintain natural balance in important of the uninterrupted functioning of 6 seasons at the right time in the balance of the nature in the expresses. The order of the season are their characteristics should remain intact. Trying to make any kind of changes in these tampering with the nature is the destroy the nature balance. The sequence of the season and the process of the season have been termed in yagyas in Atharveda. Sa yagyo yajati yagyam ritunam. There is a law of perform yagya in every house along with the continuous yagya of nature. The yagya organized every day in every season, in which aromatic and medicinal substance of offering along with the ghee and pollution can be made in effective every day, even today. It is said to Atharveda that the purity of safety of the environment depend on the water, air, and vegetation. By purification of balance of these 3, the problem of pollution will automatically be contained. In the said mantra, the word medicine means vegetation. Therefore, purification and protection of environment is possible only keeping water, air, and vegetation pure, safe. Therefore, forests must remain safe and adequate quantity for human life, and protection of animal and birds in forest and garden is also essential. As a result, a healthy life will be possible due to the purification of the environment. Therefore, tapovanas have an important place in Indian culture. The tapovanas where trees and creepers flourished and grew in the process of yagya, etc. Also want to continuously along with the monthly and annual yagyas. Havan was performed daily in this way. Tapovanas made an important contribution of environment protection. Water purification is important in environmental purification. Water is not only used to drinking, but it is also a main reason for the production of food, vegetation, etc. Therefore, water is very useful and essential element of for life. It is also essential for the water to be pure. Impure water is not only the causes of suffering, the fatal disease for human beings. It will be also proven to be destructive for food and trees. Therefore, the Rigveda's pure water has been called a medicine for the disease like nectar. आपसु मे सोमः अब्रवीदन्ता विश्वानि भेषजा अग्नि च विश्व शम्भुमपावश्च विश्वभेषजी आपः इदं वा उ भेषजी रापो अमी वाचतानि आपः सर्वस्य भेषजी सस्तानि कृण्वन्तु भेषजम्, etc. Pure water has been said as essential agriculture, vegetation, and medicine. It is also been mentioned in Rigveda. In the Yajurveda, the matter of provision, observing, maintaining the balance of the entire nature and not causing any harm to nature clearly state in the mandatory form. It is propounded. It is also said there that the vegetation will benefit us the 1,000 times by the blooming the 100 times more. In Atharveda, there is a clear order to keep the water pure and construct the lake filled with the pure water nectar in the house. Through light, the importance of the pure water has been said elsewhere in the Atharveda. The water is like medicine. Pure water is nutritious like ghee is the digestive juices of food and provides life, strength, radiance, and the manliness. The
mantra of the above mentioned Vedic codes were it has been taken about to the observe, protect, and not harm nature along with the protection of nature. All around development of the human beings has also been given the prominent place. That is the progress, welfare, and health of the human being has been linked with the protection of growth of nature. If there is protection of development of the nature, then only human will be protected by the development. There is a direct relationship between the security and prosperity of human beings with the safety of purity of nature. The basic feeling of the relationship, the basic human life is the balance and conservation of nature. Therefore, this fact should not be neglected. Although along with the water, the purity of the air and the safety of its purity are also essential for our lives. Air is life, and life is not possible without the air. Some days can be spent without water, but some moments can not be spent without air. In Rig Veda, air has been called the storehouse of the nectar. Air has been described as a only medicine for the all diseases. In the above mantra, pure air has been described as a medicine, health enhancer, or cure for all diseases, and provided of long vitality. Therefore, its conservation of essential. This is possible only when we give the highest priority of purification activities. Similarly, like Yajurveda mantra. Here also sentiments of keeping the air pure and not polluted it by doing any kind of evil, and the sky has been expressed. Earth has been considered the mother and deity of the Vedas. There is also the provision of worshipping the earth. Who can dare to defame and defend that which the worshipable mother and God? By saying Pratibhyam Sambhava. The Yajurveda in all the 63 mantra Prithvi Sukta in Atharvavedas and many other places. Bhumi is called mother, and Prajyaha, cloud, has been called father. In the Prithvi Sukta itself, a wish has been made for the earth to be fragrant, and for oneself to be as a fragrant and the fragrant as the earth. In every mantra, Prithvi Sukta considered the earth as a basis of living beings, the basis of human life, mother nature, and sustain. A prayer has been made for all the welfare. In the Vedic time, the Indian people who considered the earth as their mother, themselves as its sons, the Prajyanaha sustained the sky as their father. Could not be even imagined polluting to the earth or sky. Today we have polluted the earth so much. We have filled the sky with polluted air. The solution of this problem is only pollution control, conservation of forest, control the pollution, and the complete ban on the emission of the dirty substance of the, and this is possible only the promoting Havan and its maximum use the society. In this way, we can make society healthy and happy. Only when the earth and the climate are pure can vegetation, medicine, grains, and forest food items be healthy and conducive to health. In the Atharvaveda, clean land and clean environment, etc., has been addressed without the honifies light. The plants grow in the pure land, irrigation with the pure water, and grow in the pure environment, make the environment pure and the fragrant, and destroy the impurities. Plants provide life forces to all living beings. It is stated and many places in the Vedas that certain medicine purifying the environment. That is the why Yajna is daily Havana, liquid and medicine properties, and fragrant is nutritious things are offered, due to which the environment becomes healthy. Fragrant and pure
Therefore, yajna has especially importance of the protection of the environment. In Yajurveda, the rays of the sun are considered to be purifying the environment and have been accepted the purifying of pollution polluted environment elements. Similarly, fire has also been described as a purifying of the water, environment and the destroy the polluted elements. The importance of the plants and their consumption of cure diseases has been mentioned in the Yajurveda itself, which the above mantra, the vegetation grow the 100-fold. It has been said the human health increasing the 1,000 times. This human health is closely related to the spread of the vegetation. The great importance of the avastha tree, ashwastha tree, it means people tree, tree is shown in the Vedas. It is provided oxygen day and night. There, the tree is not only virtue but also extremely healthy. It is the said. It is said to be the abode to the god. Gugula has been accepted the atmosphere purifier, environmental protection, and health enhancer. At all these plants, people Gugula tree has been described as an environmental protection purifier and destroyer the germs. Therefore, planning and protection of such trees should be done in maximum quantity. Although there was a problem of environmental pollution in Vedic era, the Vedic sages were aware of this potential problem. Therefore, in the Vedic literature, adequate attention has been paid the cleanliness of earth, water, air, sky, and fire. Keeping the environment pure in our religion is modern era. Noise pollution is also increasing. It is essential to control immediately by the religious institutions, government, and common citizens. All type of pollution must be controlled as soon as possible. Otherwise, human life will be continue to move toward destruction. Thank you, ma'am. धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अभूतपूर्व जानकारियों से हमें परिचित करवाया। अब मैं अगले पेपर प्रेजेंटर के रूप में मिस्टर प्रफुल्ल जी से आग्रह करती हूँ। मिस्टर प्रफुल्ल उड़ीसा के भुवनेश्वर के KISS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में रिसर्च स्कॉलर हैं। मैं मिस्टर प्रफुल्ल से आग्रह करती हूँ कि वे रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ महिमा धर्मिंदा इंडियन नॉलेज सिस्टम पर अपने विचार प्रस्तुत करें। मिस्टर प्रफुल्ल। यस मैम। हाँ जी सर, प्लीज स्टार्ट करें। हाँ जी मैम। Warm good afternoon to everyone. I'm Prafulla Sabara from Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar, Odisha. On my research topic title on religious perspective of Mahima Dharma in the Indian knowledge system. Mahima Dharma, a 19th century religious and social cultural movement originated in Odisha, held a significant place within India diverse civilization ethos. It challenged established caste system, idolatry, and ritualistic practice by promoting the worship of the formless divine, Aleka or Sunya Brahma, aligning with Upanishadic concept of Nirguna Brahma and Buddhist Sanyata. The movement advocated for liberation through inner purity, confession, and surrender, offering an inclusive spiritual path accessible to all and critically ritualistic access. As a social movement, Mahima Dharma championed inclusivity and spirituality, equality, particularly for marginalization groups like women, exemplified by humanitarian spirit, and Saint Bhima Bai, who prioritize the world salvation over personal well-being. Mahima Dharma embodies the dynamic interplay, innovation, and continuity within the Indian knowledge system, drawing on traditions, ahimsa, and renunciation, while interpreting them to address social injustice and promote environmental awareness, as highlighted by its teachings on the eternal nature of Prakriti. Thus, Mahima Dharma expanded the scope of the Indian knowledge system by incorporating them
themes of equality, confession, ecological justice. Philosophical foundation of Mahima Dharma. The philosophical foundation of Mahima Dharma is rooted in the concept of Aleka and Sunya Brahma, the supreme reality that is formless, infinity, and attributeless, surpassing all human categories of thinking and expression. In Stuti Chintamani, Bhimavai writes, Aleka Nirakara, Ananta, Arupa, Jahana Janoi Kehi, Tahaku, Bandhiva Kemiti. Mahima Dharma maintained that ultimate divine cannot be contained inside image or anthropomorphic forms. In contrast to traditional Hindu traditions that place a strong emphasis on idol worship and complex rituals. True devotion is achieved by inner purity, discipline, and submission rather than external rites, since the supreme being is internal, infallible, and beyond attribute, nirguna. There are three pillars of ethics. One is satya, truth, non-violence, ahimsa, confession, daya. It encourages spiritual equality for everyone, especially marginalized and indigenous people, and rejects caste distinction. Priestly domination and social hierarchy are criticized by strict discipline, which place in the strong emphasis on rigidity and simplicity. Social and reformer social and religious reformer. Mahima Dharma was reformistic movement that offers priestly authority, ritualistic rigidity, and social discrimination, regardless of caste, gender, and social standing. Mahima Swami teachings placed a strong emphasis on spiritual equality and said that everyone might devote themselves to formless divine. In Stuti Chintamani writes, Jati Pati Pucho Nahi, Aleka Mahimare, समस्त प्राणी समान दया धर्म परमरे. These elitarian viewpoint aligned with the broader Indian tradition of Bhakti movement, which placed a higher value of devotion and moral behavior than or social privilege. Mahima Dharma introduced a religious system based on moral, spiritual universality by destroying caste basis, prejudice, and ritual dependency. There is ecological consciousness in Mahima Dharma. Mahima Dharma views nature as an expression of the divine, reflecting the respect that the Indian knowledge system has for river, forest, mountain, and all living things. In keeping with an early manifestation of ecological consciousness, followers are encouraged to live in balance with natural environmental. In the Stuti Chimtamadi write, जीवन को बड़ देख पृथ्वीर रक्षा कर. The words Bhimavai constantly highlighted the purity, environmental, and encouraged protection of forest, waterways, and animals. This is the consist with Indian philosophical ideas that encourage sustainability and moral interactions with environmental, such as the idea that Prakriti is timeless and sacred. Sustainability through minimalization. In Stuti Chintamani say, Sadharana Jivana Alpa Sampati, Mo Bhakti Vara Jiva, Ananta Sunyara Sati. Mahima Dharma teachings encourage research, conservation, minimal consumption, and simple life. Sustainable practices are encouraged. Ecological impact is decreased by ideas like moderation in living and non-preservation. The movement promotes self-control, detachment from material wealth, and balance with the natural world, all which are in life traditional Indian ecological knowledge. Mahima Dharma and Indian philosophical tradition, there is some philosophical concept is combined, just like Advaita Vedanta. In India, philosophical religion, philosophy, Mahima Dharma, maintained especially since it expresses its own spiritual identity, while combining concept of Buddhism, Jainism, Advaita Vedanta. The worship of Sunya, the formless deity, is the art of its philosophy. The align with the Adventic focus on ultimate reality, transcendence names and forms. The non-dualistic perspective expressed in the world of Bhimavai.
Mahima Dharma is a spiritual tradition that, like Buddhism, teaches moral behavior, confession, and non-violence. By fusing devotion with social equality, it creates a spiritual that open to everyone, irrespective of caste or social status. Mahima Dharma offer moral introspective social renovation, religion marred by merging metaphysical understanding with practical ethics. Advaita Vedanta stresses non-dualistic and the ultimate reality beyond form, which is consist with the Mahima Dharmas, emphasize on the formless divine in inner realization. Mahima Dharma intellectual foundation, which emphasizes ethical life and internal spiritual discipline, sets it part of ritualistic tradition. There is ecological conservation, Jainism in Buddhism. In Stuti Chintamani write, ଜୀବନରେ ଅହିଂସା ମୋ ଧର୍ମ ମୋ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦୟାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏହା ସତ୍ୟ ବଲ୍ୟ. The moral principle of Buddhism and Jainism is similar to Mahima Dharma, non-violence, confession, ecological care. This demonstrates the interconnectedness Indian religious philosophy and its emphasization perspective of ecological, social, spiritual well-being. And other is community and devotional practice. Community prayer, meditation, and practices Mahima Dharma followers encourage group devotion to the formless deity. There are few ritual and emphasize is on simplicity, self-discipline, and service to other. The teachings of saint like Bhimabai and devotional song Bhajana offered moral principle of create the community. In Stuti Chidamani, one of dialogue, Sangare Bhakti, Sangare Daya, Sangare Jivana, Muktira Marga. The focus on non-violence, ethics, and simplicity reflect the Indian religious ideal of fusing spiritual devotion with everyday life, which make Mahima Dharma and social religious movement. In my conclusion, Mahima Dharma provides a deep understanding of spirituality, ethics, and environmental consciousness within the Indian knowledge system through its philosophical and religious teachings. Its focus on simplicity, ecological respect, non-violence, and the formless divine establishes it as a social and spiritual reform movement. Mahima Dharma is prime example of how Indian religious tradition may promote balanced and sustainable living by tying moral behavior to devotion and environmental care. As a relevant paradigm for today's issue, the movement continue to encourage members to combine spiritual understanding with moral and environmental responsibility. Thank you, ma'am. I conclude. धन्यवाद. आपने प्रस्तुत विषय के विभिन्न बिल्कुल नवीन एस्पेक्ट पर बहुत स्टेक सागर्भित और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा की है. अब मैं अगले पेपर प्रेजेंटर के रूप में मिस मितु भाष्य, जो कि असम के कामरूप के पब बॉन्सर कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. मैं उनसे आत्मीय निवेदन करती हूँ कि वे इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट सोसाइटी विषय पर अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. Today, in this international conference, I am going to present my paper on topic environmental ethics and its importance in present society. First, I started with introduction part. Environmental ethics is a branch of ethics which is mainly concerned with how people interact with the environment. It also teaches our moral duties to save and maintain our environment also. It aims to provide ethical justification and moral motivation for the cause of global environment protection. Environmental ethics helps define man's moral and ethical obligations towards the environment.
Environmental ethics simply tries to answer the questions about how humans should relate to their environment, how we should use our earth resources, and how we should behave with our species of the world. Significance of the study is excessive and unjustified use of natural resources, urbanization, industrialization, and many other causes like overpopulation, deforestation, climate change are responsible for environment degradation. The present study is an attempt to trace the importance of the role of human society for conservation and protection of environment. This paper aims at finding the root cause of the violation of environmental ethics and finds the path for its solution. Objectives of the study is to study the necessity of environmental ethics in maintaining the ethical relationship between people and nature. Second objective of this study is to highlight the effects which new generation going to face in their near future. Third one is to find out the prevalent conditions of morality and motivation for the cause of global environmental protection and also ethical justification. Environmental ethics is an established field of practical philosophy which advocates the rules for protecting natural things and sustainable use of natural resources. It provides moral grounds for social policies aimed at protecting the environment. The main concept of environmental ethics is to teach the people to stop disrespect the nature with the cause of global warming and environmental degradation. It is our moral duty to protect our environment and to save nature for the future generation. One of the main concepts of environment is deep ecology. Deep ecology is a theory which was introduced by Arne Naess in 1972. It is an environmental philosophy that asserts all life, including human and non-human, have intrinsic value and all deserve the same respect and same right to live in this world safely and happily. It rejects the idea that humans are superior to other species, promoting a live and let live life attitude. Not only human, but also all the species of the world have the right to live a safe life. Impacts of technology on the nature. Today's world is the world of science and technology. Today's society is dependent on science and technology. But technology comes with some drawbacks also. Negative effects of technology include pollution, resource depletion, global warming, habitat destruction, climate change, the accumulation of e-waste containing toxic materials, etc. Environmental ethics helps to prevent the negative impacts of technology by providing moral framework for human actions by promoting the principles which is called refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle principle. Environmental ethics and climate change. Climate change is one of the major problems in this world. It is a long-term alternation of global temperature and weather patterns primarily caused by human activities. Environmental ethics may highlight the need for international and national support to manage the climate crisis, guiding moral obligations towards a healthy planet, and addressing the injustice caused by environmental degradation. Environmental ethics and sustainable development. Respect for life is the goal of all ethics, especially environmental ethics. Environmental ethics guides sustainable development by establishing the moral obligations of humans towards the environment. Sustainable development aims to balance present needs with future needs, requiring the integration of ethical environment practices that foster harmony between human society and nature. Environmental ethics and good governance. One main institution that addresses environmental issues is good governance.
Environmental ethics guides good governance by establishing ethical principles like respect for nature, sustainability, and justice to inform environmental policy and decision making. Environmental issues like climate change, pollution are better managed through effective governance. Now I come to my conclusion part. Environmental degradation and disaster is today's reality. Ethics, human behavior, and values are all needs to manage, respect, and safe environment. Necessary awareness should be created by engaging agencies to ensure proper and justified use of natural resources. Every citizen of the world must follow the ethical norms to protect environment and live a safe life. Thank you, ma'am. धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सहजता से उपयोगी बहुपयोगी विविधतापूर्ण उपकारों और एवं जानकारियों से हमें अवगत करवाया। अब मैं अगले पेपर प्रेजेंटर के रूप में डॉक्टर विद्या पी वर्मा और डॉक्टर योगिता वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विद्या पी वर्मा विरार के वीवा कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हेड है और डॉक्टर योगिता वर्मा ग्वालियर के RJIT टेकनपुर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज में हेड के पद पर सुशोभित है। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे अपने विषय एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लिटरेचर, द स्टडी ऑफ रोमांटिक पोएट्री पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। डॉक्टर विद्या, डॉक्टर योगिता, क्या आप उपस्थित हैं? डॉक्टर विद्या पी वर्मा और डॉक्टर योगिता वर्मा जी, क्या आप उपस्थित हैं? लग रहा है कि शायद वे हमसे जुड़ नहीं पाए, तो मैं अगले पेपर प्रेजेंटर के रूप में डॉक्टर अनिल बाबू और डॉक्टर बबीता सोलंकी जी से सादर अनुरोध करती हूँ। यस मैम। हाँ जी सर, अपने प्रशिक्षणार्थी में मानव एवं पर्यावरण मूल्य का मानवीय जीवन में उपयोगिता विषय पर हमारे साथ अपने अनमोल विचार साझा करें। जी नमस्कार सभी को, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन एंड ऑल पार्टिसिपेंट। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल बाबू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। आज जो हमारा टॉपिक है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, बीएड प्रशिक्षणार्थियों में मानव एवं पर्यावरण मूल्य का मानवीय जीवन में या मानवीय जीवन में उपयोगिता। आज हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा ही विषय है, दोनों ही ज्वलंत हैं। वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के प्रति व्यक्ति जो एक अवेयरनेस होना चाहिए वो कहीं न कहीं कम हो रही है। तो देखते हैं कि मानव जीवन एवं पर्यावरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मानव का अस्तित्व या उसकी यात्रा प्रकृति से प्रारंभ होकर उसी में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को नैतिकता, आदर्श और संस्कारों पर आधारित करता है, उसी प्रकार पर्यावरण भी उसके जीवन की दिशा और दशा तय करता है। वर्तमान समय में जहां भौतिकवाद, औद्योगिकीकरण, तकनीकी प्रगति ने जीवन को एक सुविधाजनक बनाया है, वहीं पर यह भी सत्य है कि इन परिवर्तनों ने हमारे जो मानवीय मूल्य हैं और पर्यावरणीय संतुलन को एक गंभीर चुनौती दी है। ऐसे में आवश्यक हो गया है कि हम मानव एवं पर्यावरण मूल्य की उपयोगिता को समझें, मानवीय मूल्यों को समझें और पर्यावरणीय मूल्यों को समझें और उन्हें जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। मानव एवं पर्यावरणीय मूल्य है, मानवीय और पर्यावरणीय मूल्य है, उनकी प्राप्ति शिक्षा द्वारा अर्जित की जा सकती है।
शिक्षा वह योग्यता है जो जीवन और जगत की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा हमें सही और गलत में भेद करना सिखाती है, सही के लिए संघर्ष करना और गलत का विरोध करना सिखाती है। शिक्षा का कार्य चूंकि शिक्षक से जुड़ा है, इसलिए शिक्षक का विश्व में सम्मानजनक और श्रेष्ठ स्थान है। चूंकि हमारा जो विषय है बीएड के जो ट्रेनीज हैं, बीएड प्रशिक्षणार्थी हैं, वो भविष्य के भावी शिक्षक होंगे। इसलिए इन प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रकार से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए जिससे इन प्रशिक्षणार्थियों में मूल्य के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता भी विकसित हो सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विद्यार्थियों को मूल्यपरक शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। वर्तमान में मूल्यों का विघटन एवं पर्यावरण का क्षरण तेजी से हो रहा है। आज समाज में मूल्य संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मानव न तो पुराने मूल्यों को पूरी तरह नकार पा रहा है और न ही नए मूल्यों को सहर्ष स्वीकार करना चाहता है। इस द्वंद्व की स्थिति में उम्मीद की एक किरण नजर आती है, वो है मूल्य आधारित शिक्षा और पर्यावरणीय आधारित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा एवं इसके संवर्धन और विकास हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रदत्त मूल अधिकार एवं अनुच्छेद 51A में प्रदत्त मूल कर्तव्यों का भी राष्ट्रीय मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित एवं सही दिशा प्रदान करना ही मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्रता या हम कहें स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आयोग राधाकृष्णन आयोग 1948 में जो बना था, हम सभी जानते हैं, ने मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने पर अधिक बल दिया था। आयोग ने यह भी कहा था कि विद्यालयों के साथ साथ विश्वविद्यालयों, कॉलेज एवं महाविद्यालयों में प्रातःकालीन सभा आयोजित किया है और साथ ही साथ विभिन्न महापुरुषों के विचारों को पढ़ने पर जोर दिया जाए। इससे हमारी भारतीय संस्कृति का कहीं न कहीं एक उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी मूल्यों के ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए भी ध्यान आकर्षित किया गया। वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है कि उसमें मूल्य आधारित शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा पर भी एक गहन चर्चा की गई है। इस नीति का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना, जिसमें करुणा, सहानुभूति, मूल्य और संस्कृति समाहित हो। इस प्रकार विभिन्न आयोगों एवं नीतियों ने मूल्यों के संवर्धन और विकास हेतु सतत प्रयास किए। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागरूकता का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं सतत विकास के लक्ष्य जो 2030 जिसका लास्ट समय है, इस विषय का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में पर्यावरण का कानून जो देखते हैं लगभग 125 वर्ष पुराना है। इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य मानते हुए यह प्रावधान किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की नीतियों, योजनाओं और अधिनियमों को धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। इस अधिनियम में इस बात पर जोर दिया गया कि अनावश्यक पेड़ पौधों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध हो और पुनः पर्यावरण के संरक्षण एवं नए पेड़ पौधों के सृजन हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया जाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रमुख रूप से पारित किया। इसके अंतर्गत मानव, प्राणियों, जीवों, पादकों में होने वाली समस्याओं का निदान एवं संकटों से बचाना एवं उनकी समृद्धि एवं संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास करना होगा। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2004 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का ड्राफ्ट भी जारी किया गया। इस नीति में इस बात को संदर्भित किया गया कि वर्तमान पर्यावरणीय नियमों एवं कानूनों को विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता है। इस नीति के संकटग्रस्त पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का न्यायोचित उपयोग, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ को ध्यान में रखना एवं स्थानीय संस्थाओं को
पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तिशाली बनाना इत्यादि प्रावधान इस नीति में मुख्य रूप से रखे गए। आज हम देखते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए झूठ फरेब का सहारा लेकर मानवीय मूल्यों को क्षतिग्रस्त कर रहा है। बुद्धिजीवी प्राणी भी इस कार्य में पीछे नहीं है, जिन्हें मूल्य एवं पर्यावरण का ज्ञान तो है, किंतु कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अगर हम बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, बीएड के ट्रेनी हैं, उन विद्यार्थियों को अगर हम ट्रेंड करते हैं, हम एक उदाहरण और देखेंगे यहाँ पर कि कोविड के समय में हमें देखो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता सभी भारत के और पूरे वर्ल्ड के लोगों को लग रही थी। वहीं पर पर्यावरण में जो हमारे आसपास पेड़ पौधे थे हमें फ्री में ऑक्सीजन देते थे, तो हम उनको बदले में क्या दे पा रहे हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह आता है कि हम उनसे ऑक्सीजन प्रतिदिन लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति लेता है, लेकिन क्या हम प्रत्येक दिन उनको कुछ अंश उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। तो इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि कहीं न कहीं जो बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं, भविष्य के शिक्षक होंगे। अगर इन विद्यार्थियों में हम पर्यावरण और मूल्य के प्रति इनमें जागरूकता लाते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो शिक्षक बनने वाले हैं वो एक जन जागृति फैलाएंगे समाज में, अपने विद्यार्थियों में मूल्यों के उत्थान के लिए पर्यावरण जागरूकता के प्रति उनकी सूझ विकसित करेंगे, और यही समाज में मूल्यों के विकास और पर्यावरण जागरूकता की चेतना को जागृत करती है। यदि विद्यार्थियों एवं समाज के लोगों में मूल्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगी, तो निश्चित ही देश को भविष्य में आने वाली विनाशकारियों जो महामारी है, प्रॉब्लम्स है, उनसे बचाया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रेरणास्पद तथ्य गंभीर चिंतन मनन के अधिकारी हैं। अब मैं अगले पेपर प्रेजेंटर के रूप में मिस रश्मि रणदेव जी को जिसे आत्मीय निवेदन करती हूँ। रश्मि जी जालंधर के डीएवी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप फिलोसफी ऑफ नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी इन व्यू ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विषय पर बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। रश्मि Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. As I'm audible, ma'am? जी मैम। Okay. Good afternoon to one and all present here in the conference. Firstly, I'm very thankful to ICPR for giving me opportunity for presenting a paper in this conference. And the title of my paper is Philosophy of Nature and Sustainability in View of Indian Knowledge System. From the ages, it has been seen a relationship between nature and philosophy. We all know about the nature. Philosophy helps us to understand how human beings are related to environment with a view of defending the planet against climate change and advancing towards sustainable development. Today, we are facing the environmental crisis from climate change and biodiversity, loss to resource depletion and ecosystem degradation. These challenges demand a deeper exploration of our values, beliefs, and moral principles that guide our interactions with the natural world. At the heart of environmental philosophy lies a fundamental question. Do we as human beings bear ethical responsibilities towards preserving the environment for the sake of present and future generations? So, this article aims at the philosophical nature of environmental ethics from the various perspectives of human beings, obligations towards the environment, and how we can sustainably develop our world and safeguard the well-being of our future generation. How we can have a deeper understanding our interconnectedness with our moral obligations and with Indian knowledge system. So I just want to first of all give a brief definition of philosophy of nature, which is also known as natural philosophy, is a philosophical perspective of the universe and nature which focuses upon its fundamental principles, matter and motions, and doesn't believe in the supernatural influences. Secondly, sustainable development means progress in human beings that we can extend or prolong over many years rather than just a few years. It is ultimate goal for both preserving natural and improving the lives of people everywhere. Sustainability implies that human well-being and environmental health needs to be complementary and not contradictory.
Lastly, Indian knowledge system is based on a deep understanding of the natural world and the recognition of the interconnectedness of all living beings, and is reflected in the concept of Vasundhai Katumbakam. That means the world is one family, which tells the need for global cooperation and collective responsibility. It also places great emphasis on living in harmony with nature, recognizing that human well-being is linked with the health of the natural world. By adopting the holistic approach of knowledge, we can develop a deeper understanding of the world and our place within it, ultimately leading to a more sustainable and equitable future. The philosophy is nature is integral to the Indian knowledge system, which is rooted in a holistical and interconnectedness. Indian knowledge systems talks about harmony, balance, and responsibility towards nature, providing a profound ethical and spiritual framework, which is opposite to the regulatory approach of the modern environmental law. Some philosophies, like Sankhya, describe the world as interplay of Prakriti and Purush. Harmony involves uniting these two aspects. Both Indian knowledge system and philosophical principles are deeply intertwined with environmental conservation and sustainable living. Indian knowledge system provides a deeper philosophical and ethical foundations that emphasizes harmony with nature, interconnectedness, and a sense of responsibility. This holistic approach can complement and strengthen contemporary environmental legal framework, moving beyond mere compliances to foster genuine ecological steward. Indian knowledge system is wholly based on the natural philosophy. Man, being a part of nature, has to obey the natural rules and orders. Indian philosophy offers a unique perspective on sustainability, emphasizing the importance of living in harmony with nature, like ahimsa, a fundamental principle of Indian philosophy with implications of sustainable development, animal welfare, and environmental conservation. Aparigraha, that is non-possessiveness. This concept is particularly relevant to modern sustainability challenges such as climate change, resource depletion, and waste management. Savadhyay, that is self-study. This concept is essential for sustainable development as it enables individuals to understand their impact on the environment and adopt more sustainable behaviors. These concepts are not only relevant to individual behavior, but also implications for policy making and sustainable development practices. Some of the some principles of sustainable development are also there. Like first is Chipko movement. We all have heard about it. Chipko movement, this grassroots movement in India was inspired by Gandhian philosophy of non-violence and sustainability, successfully protected forests from logging and deforestation. The Chipko movement demonstrates the power of community-led initiatives in promoting sustainable development. Secondly, the zero budget natural farming initiative was taken. It was launched in India, promotes sustainable agricultural practices that eliminate the use of chemical fertilizers and pesticides. The zero budget natural farming is based on Indian principles of sustainability such as Aparigraha and Svadhyay and has improved the livelihoods of thousands of farmers. Thirdly, the Indian government initiatives on Ayurvedic medicine. This initiative promotes the use of traditional Ayurvedic medicine, which is based on Indian principles of sustainability and holistic health. The initiative has improved healthcare outcomes and promoted sustainable development in India. Next, further, modern sustainability development institutions and framework may not be equipped to handle the unique principles and practice of the Indian knowledge system. This can lead to resistance to change and difficulties in integrating new ideas. The Indian knowledge system is based on a distinct epistemology that emphasizes holistic, intuitive, and experiential knowledge. This may not align with the dominant epistemology on modern sustainable development, which emphasizes empirical, analytical, and evidence-based knowledge. The Indian knowledge system offers unique insights into sustainable living, holistic health, and environmental conservation. Integrating these insights into modern sustainable development framework can enrich and diversify our approaches to sustainability. It offers a valuable perspective on sustainable development, emphasizing the importance of living in harmony with nature, minimizing harm to all living beings, and adopting a simple and sustainable lifestyle. By integrating philosophical principles into modern sustainable development framework, we can develop more effective and sustainable solutions to
pressing global challenges such as climate change, biodiversity loss, and social inequality. Furthermore, natural philosophy provides a unique perspectives on the human nature interface, emphasizing the importance of recognizing the intrinsic value of nature and the need to adopt a more reciprocal and mutually beneficial relationships with the natural world. By embracing the principles and practices of Indian knowledge system, we can develop a more holistic understanding of sustainability and create a more just, equitable, and sustainable world for all. As ancient sages and cultural practices emphasizes the importance of caring for flora, fauna, and prakriti, with wisdom passed down through cultural rituals, folk tales, songs, poems, festivals, and devotional observance. Saints, Sufis, and priests often act as custodians of this wisdom, promoting environmental awareness and ethical behavior through their teachings and actions. Festivals and rituals often incorporate elements of nature worship and in reverence, enforcing the connections between people and the natural world. Tribal communities often have a deep connection to nature, with their festivals, dances, and oral literature reflecting their relationship. With ecological integrity. A sustainable ethic is an environmental ethics by which people treat the earth as if its resources are limited. Over time, various Indian philosophies have proposed different schools of thought advocating for environmental protection. A distinctly positive attitude is found in Indian philosophy, where nature is not just a resource, but a living entity, sacred and worthy of reference. Different philosophers from the protection of environment were proposed by different philosophies. The Indian philosophers have shown a positive attitude towards the protection of environment and nature. In India, a profound interconnectedness exists between saints, priests, Sufis, and the common people with nature deeply. World is a manifestations of the divine. Cultural and religious practices across the subcontinent consistently stress environmental stewardship and the importance of preservation. A powerful example of this spiritualism spiritual environmental link in a river Ganga, which is considered the holiest of rivers in India, worshipped as a mother and goddess. Ganga presents purity and life. Despite facing several pollutions, public movements, and government initiatives continue to work towards a revival, reinforcing the message that traditional reverence must align with ecological responsibility. Equally sequent with the Kumbh Mela, one of the largest spiritual gathering of earth, held at the confluence of the Ganga, Yamuna, and the mythical Saraswati River. Kindly The act of conclude, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, it is the last line only. The act of, in the last, I just want to conclude. The path of sustainability lies not only to the importance of living in harmony with nature. Indigenous knowledge offers valuable lessons, experiences in natural sustainability and environmental conservation. Practice developed our countries, centuries have helped local communities live in harmony with nature, balancing the use of natural resources with the need for ecological preservation. As the world faces environmental challenges like climate change, deforestation, and biodiversity loss, integrating indigenous knowledge into modern sustainability practices offers a promising pathway for ecological relevance. By preserving and integrating these and in the last, I'm very thankful to all of you for giving this chance. Thank you so much. धन्यवाद मैम, आपने विस्तार से आवश्यक बिंदुओं पर बहुत ही सटीक, सारगर्भित और ज्ञानवर्धक चर्चा की है। धन्यवाद। अब मैं कॉन्फ्रेंस के अंत में आदरणीय डॉक्टर अनामिका जी को
प्रस्तुत Please, सत्र कुछ कहना करेंगे। हाँ जी मैम, जैसा कि मैसेजेस में भी था और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पेपर एक्सेप्ट हुए थे, तो कम से कम हमें वो लिस्ट तो बता दीजिए मैम कि ये पेपर सेलेक्ट हुए हैं। मैम, क्योंकि आज कन्वीनर मैम की तरफ से हमें जो लिस्ट अभी प्रोवाइड की गई है उसमें सबकी प्रेजेंटेशन हो गई है। बस विद्या मैम और योगिता मैम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। बाकी आप एक बार अनुकंधारी मैम से, जो कॉन्फ्रेंस कन्वीनर है, काइंडली उनसे कांटेक्ट करें इसके बारे में, क्योंकि कल भी सेशन है। अगर आपको मेल आई है तो वो वहां पे एडजस्ट कर देंगे कल के ऑनलाइन सेशन में। ठीक है जी? ओके मैम। हाँ जी। ओके मैम। तो अब मैं आदरणीय अनामिका जी को कंट्रीब्यूट करने के मंतव्य से विचारों की ज्ञान की भगीरथी में अवगाहन करवाने हेतु सादर नमन अभिवादन के साथ आमंत्रित करती हूँ परम सम्माननीय प्रोफेसर अनामिका जी। धन्यवाद। आपकी हिंदी बहुत ही मधुर है मैम, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। तो क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उड़ीसा से हैं और कालीकट से और इधर से हैं, तो सभी अगर हिंदी समझते हो तो मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी, पर अगर नहीं तो फिर मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी। आप कैसे कहती हैं? जी मैम, हिंदी में बोलिए आप। ठीक है जी। तो अभी तो मैंने नोट तो सारा वैसे इंग्लिश में ही किया, पर हिंदी इतनी अच्छी बोल रही हूँ और हिंदी सप्ताह चल रहा है तो इसलिए हिंदी में बोलना चाहूंगी। पर यह है कि कुछ टर्म्स तो अब इंग्लिश में आएंगी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी नोट किया है, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इंग्लिश में ही बोला। तो आज का ये जो सेशन था काफी इंटरेस्टिंग और काफी मतलब सिस्टमैटिक चला और बहुत ही डिसिप्लिन वे में, और पूरा टाइम के अंदर पूरा हो गया, जबकि हम थोड़ा सा लेट शायद शुरू हुए थे, पर बहुत ही अच्छे से चलाया मैम ने। दीप्ति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इनवाइट करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ 9 पेपर पढ़े गए हमारे इस सेशन में। तो सबसे पहला जो पेपर था मिसेस आरती एम का था। ये रिसर्च स्कॉलर है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी कालीकट में। इनका था टॉपिक डीप इकोलॉजी एंड बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्धिज्म को और डीप इकोलॉजी जो एक वेस्टर्न फिलोसफी है उसको जोड़कर बहुत ही अच्छा एक पेपर प्रेजेंट किया। इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो इंटरडिपेंडेंस है, जो आपस में जो मतलब एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम पर बेस्ड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, तो उस से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। इकोलॉजी जो है हमारा जो पर्यावरण है, हमारी परिस्थिति है, ये इसमें हाँ सारे एलिमेंट्स इंटरडिपेंडेंट हैं। और बुद्धिज्म में भी इंटरडिपेंडेंस की बहुत बात की गई है। जो डिपेंडेंट थियरी ऑफ ओरिजिनेशन है, प्रतीत्य समुत्पाद, उसमें सारे एलिमेंट्स का, पूरी नेचर का इंटरडिपेंडेंस दिखाया गया, एक चीज दूसरे चीज पर निर्भर कर रही है। तो उस व्यू को लेते हुए इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इकोलॉजी में हम अपने आप को अलग नहीं मान के चल सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि हम सब कुछ ग्रहण कर लें और दूसरा कोई ग्रहण ना कर पाए। अगर हम एक पार्ट को हानि पहुंचाते हैं तो दूसरे पार्ट को भी हानि होती है और हमें खुद को भी हानि होती है। तो इस तरह से जो हर एक चीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, सबका एक आंतरिक मूल्य है, स्वतः सिद्ध है हर चीज। तो इसलिए हमें अहिंसा का पालन करते हुए और जो डीप इकोलॉजी का जो वाइडर पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो वस्तुएं हैं उनको रिसोर्सेज ना मानकर, उनको संसाधन ना मानकर, उनको अपने आप में मूल्यवान समझना चाहिए। तो एक अच्छा पेपर था। दूसरा जो पेपर प्रेजेंट किया है ये कल्याणी जी ने प्रेजेंट किया। इस पेपर का टॉपिक था मैन, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एक्सप्लोरिंग द इंडियन ट्रेडिशंस। तो इन्होंने जो आधारभूत अपना जो कॉज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन लिया वो था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, कि मानव केंद्रित जो विजन है, मानव केंद्रीय विचारधारा है, वही सारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का कारण है। इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को इंडियन स्क्रिप्चर से जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने वैदिक और उपनिषदिक टेक्स्ट की बात की, जैनिज्म और बुद्धिज्म की, और चिपको मूवमेंट की बात करते हुए कहा कि इन सब में ये दिखाया गया कि हमें
एक तो इंटरडिपेंडेंस की, वो जो जैसे पहले पेपर में बात की थी, बटरफ्लाई सिंड्रोम की बात की, और दूसरा दिखाया इन्होंने कि हमें मिडिल पाथ और अहिंसा को लेके चलना है। हमें ना तो ज्यादा कंजम्पशन करनी है और ना ही बिल्कुल कम कंजम्पशन करनी है, हमें अपने आप को भी सस्टेन करना है, लेकिन हमें एक मिडिल पाथ बनाना है, एक मध्य मार्ग लेकर चलना है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म से अहिंसा का कॉन्सेप्ट लिया इन्होंने और ये दिखाया कि हमें एक अगर अच्छा सा संसार बनाना है तो पेड़ पौधों की भी रक्षा करनी है, नेचर की भी रक्षा करनी है, जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी है, सबका एक बैलेंस होगा तो ही ये संसार चल सकता है। क्योंकि जो आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो तभी खत्म हो सकती है जो हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और ये रिकॉग्नाइज करें कि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं और कम्युनिटी में हमें सभी को साथ लेके चलना है। इसके बाद जो अगला पेपर था ये था डॉक्टर डालिम एसके, इनका पेपर था इंडियन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल केयर एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने भी अपने पेपर में एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कारण बताया है, बट साथ ही इन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक्सेसिव यूज नहीं है, इसके साथ हमने अपनी जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी छोड़ दिया है। हमने अपने नैतिक मूल्यों को छोड़कर नेचर के प्रति हम बिल्कुल केयरलेस हो गए, हमने नेचर को बहुत ज्यादा हार्म किया है और हम ये भूल गए कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। फिलॉसफी एंड रिलीजन से इन्होंने लिया कि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो जो हमारी एंशिएंट टेक्स्ट हैं उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था। हमारे चाहे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारी और जो इंडियन टेक्स्ट हैं, उन सब में जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो वाटर है, वर्षा है, सूर्य है, पृथ्वी है, इन सबको देव कहा गया। देवता, देव मतलब जो देता है। तो नेचर हमें हमेशा हेल्प करती है, लेकिन हमें भी ये समझना है कि हम नेचर को भी एक पूजनीय चीज समझें, उसको हम ये ना समझे कि हम उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनमें जैसे बताया गया कि हर एक चीज की पूजा की जानी चाहिए, हर एक चीज में देवी देवता की बात की गई। चाहे वर्षा हो तो इंद्र देव हैं, पृथ्वी है तो पृथ्वी देवी है, तो इस तरह से बनाया गया। तो शायद यही कहना चाह रहे थे। तो इन्होंने अब ये बात की है कि आज के टाइम में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं इन चीजों को। तो हमारे को एक रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए जिसको हम बार बार यूज कर सकें। मतलब एक होती है कि एनर्जी जैसे है कोयला है या पेट्रोल है, ये खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन एक ऐसी एनर्जी की जरूरत है जिसको हम हमेशा यूज कर सके। तो सूर्य की ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी को हम एक तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके कंजम्पशन को कम कर सके। ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम से कम यूज करें क्योंकि उनसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को लड़ने के लिए हमें या तो सोलर पैनल लगाने चाहिए या एयर से जो एनर्जी बनती है या फिर किसी और तरीके से हम ऐसी एनर्जी बनाएं जिसमें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज कम से कम हो और हम जो पर्यावरण में जो तापमान की वृद्धि हो रही है उसको कम कर सकें। तो ये भी बहुत एक अच्छा पेपर था। इन्होंने भी एक नए एस्पेक्ट पे बात की। नेक्स्ट पेपर हमारा था ये निजारा मेढी जी का। इन्होंने एथिकल फाउंडेशंस ऑफ बुद्धिज्म पे बात की। इन्होंने धम्म की बात की। धम्म का मतलब है कि जो एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है जिससे सारी नेचर चल रही है, यूनिवर्सल लॉ की तरह। जैसे रित का प्रत्यय आता है बुद्धिज्म वेदों में, उसी तरह से बुद्धिज्म में धम्म का प्रत्यय आ रहा है। तो इन्होंने इससे सारे जो बुद्धिस्ट एथिकल लॉज प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की, महायान को कोट करके। प्रज्ञाशील समाधि, दान, संग की बात की, कंपैशन की, ब्रह्म विहार की। इन सब से इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि फिलॉसफी जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी काफी लॉजिकल है
दो इनका तो टॉपिक है डायरेक्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को दिखाने की कोशिश की कि किस तरह वो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि सारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो एक है और नॉन वायलेंस पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट पेपर जो है वो है सत्येंद्र दत्त अमोली जी का सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल वेलबींग इन वैदिक सूक्त। तो इन्होंने वैदिक जो सूक्त हैं उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल वेलबींग की बात की है। तो वैदिक ऋषियों ने किस तरह से मैन और नेचर के रिलेशन के बारे में बात की थी कि मनुष्य का और जो प्रकृति है उनका एक रिलेशनशिप बहुत मतलब ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बोथ फेज है। हम नेचर को कुछ देते हैं, नेचर हमें कुछ देती है, तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वन साइडेड। तो मॉडर्न जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की वो यही है कि हम एक तरफा लेके चल रहे हैं, हम नेचर से सिर्फ ले रहे हैं, नेचर को वापस कुछ देना नहीं चाह रहे हैं। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति रेवरेंस का भाव रखना है और उन्हें पॉल्यूट नहीं करना है। और रित और यज्ञ की जो बात है वो भी इन्होंने की कि रित के प्रत्यय से मतलब एक लॉ की बात की इन्होंने और किस तरह से यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ से इन्होंने हवन का मीनिंग लिया है, पर यज्ञ का एक वाइडर मीनिंग भी होता है कि हम जब भी किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं वो यज्ञ होता है। तो नेचर के लिए जब हम कुछ करते हैं, संसाधनों के लिए नेचर के संवर्धन के लिए कुछ करते हैं, वो भी यज्ञ है। तो नेचर की बात की इन्होंने, यज्ञ की बात की और इस तरह ही इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाटर, एयर, लैंड, सबका कंजर्वेशन होना चाहिए। तो उसमें किस तरह से जो वैदिक सूक्त हैं हमारे, वो किस तरह हमारी मदद करते हैं, किस तरह हमें ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट पेपर जो है ये है प्रफुल्ल जी का, जिन्होंने बाद में प्रेजेंट किया था, वैसे सेकंड नंबर पे था इनका था रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ महिमा धर्म इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इन्होंने एक सोशल मूवमेंट की बात की है जिसका नाम है महिमा धर्म। तो ये जो महिमा धर्म है एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक सामाजिक मूवमेंट चलाया गया 19th सेंचुरी में, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो लिबरेशन फ्रॉम सोशल इवल्स और इक्वालिटी ऑफ ऑल, स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल की बात की इन्होंने कि सभी लोगों को स्पिरिचुअल पाथ परस्यू करने के लिए इक्वालिटी पर रखा जाए और जो सोशल इवल्स हैं, जाति प्रथा है या अन्य प्रकार की जो सोशल इवल्स हमारे समाज में आ गई थी, उन सब का कैसे निराकरण किया जा सकता है। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल अवेयरनेस की भी बात की कि किस तरह से हम नेचर के साथ जुड़कर, उसके साथ हार्मनी में, उसके साथ एक सामंजस्य बनाकर हम जी सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जो लाइफ है इसको एक एथिकल लाइफ बना सकते हैं। एथिकल लाइफ के साथ इंटरनल डिसिप्लिन की इन्होंने बात की कि आंतरिक एक अनुशासन होना चाहिए हमारे बीच में। ये जो आंतरिक अनुशासन है, इन्होंने ये कहा कि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म के काफी क्लोज है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म में जो एथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं उसी तरह के प्रिंसिपल्स महिमा धर्म में भी लिए गए हैं। और साथ ही इन्होंने डीप इकोलॉजी के साथ भी जोड़ा इसको कि हमें इकोलॉजी की एक बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और तभी हम स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, तभी हम आज के जो खतरे हैं उनको भी दूर कर पाएंगे। अच्छा पेपर है, एक नया एंगल इन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट जो पेपर है वो मीतू बैश्या जी का है, एनवायरनमेंट एथिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट सोसाइटी। जी ये भी एक अच्छा पेपर है। इसमें एनवायरनमेंट एथिक्स के बारे में बताया गया कि एनवायरनमेंट एथिक्स होता क्या है, क्या क्या चीजें एनवायरनमेंट एथिक्स में आती हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट एथिक्स जो है हमें गाइड कर सकता है।
और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो रूट कॉज है वो है कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का जो रूट कॉज है ये ढूंढने की इन्होंने कोशिश की, और वो है कि टू स्टॉप द डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमें अपने जो पर्यावरण है उसके प्रति जो हमारा एक ऐसा भाव है जिसमें हम उसका सम्मान नहीं करते हैं अपने पर्यावरण का, और उसको सिर्फ एक संसाधन की तरह यूज करते हैं, उसी से ये सारी प्रॉब्लम उपज रही है। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, या पानी की, या पशु पक्षियों की, या मिट्टी की क्या इंपॉर्टेंस है। हम ये मान के चलते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए बनाया गया है। तो हम जब इस एटीट्यूड से चलेंगे तो हमें ना केवल हमें नुकसान होगा, नेचर को नुकसान होगा। पूरा जो इस वक्त सभी अवेयर हैं कि क्या हो रहा है, कि सारी बारिश कहीं ज्यादा आ रही है, कहीं कम आ रही है, कहीं गर्मी हो रही है, कहीं अकाल हो रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसी कारण से हो रही है कि हमने नेचर को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी है। और टेक्नोलॉजी तो हार्म कर रही है नेचर को, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत खराब है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। तो इन्होंने जो एक नारा दिया जो काफी पॉपुलर है, टू रिड्यूस, टू रीयूज एंड रिसाइकल। तो पहले तो हम रिड्यूस करें, अपनी कंजम्पशन को हम थोड़ा कम करें, और हम चीजों को रीयूज करें, चीजों को दोबारा से यूज करें और रिसाइकल करें। और जो चीजों को हम यूज कर लेते हैं उनको हम अगर रिसाइकल कर सकें, जैसे प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके नया प्लास्टिक का कोई चीज बना सकें, तो वो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट पेपर है अनिल बाबू जी का, डॉक्टर अनिल बाबू और डॉक्टर बबीता सोलंकी जी का। इनका पेपर एक बिल्कुल अलग तरीके का पेपर है, जिसमें इन्होंने ये बात की कि हमें जो मूल्य हैं उनको हमें अपने बीएड के ट्रेनीज को सिखाने की जरूरत है। क्योंकि जो व्यवहारिक मूल्य हैं और जो पर्यावरण के मूल्य हैं, ये अगर टीचर के पास होंगे तो टीचर आगे अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाएगा। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है टीचर्स की बात सुनते हैं। तो इसलिए टीचर के लिए ये वैल्यूज का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। इसलिए इन्होंने बीएड की ट्रेनिंग में इन चीजों को डालने की बात की कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें आराम तो देती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हार्म भी कर सकती है। तो हमें उन कुछ मूल्यों की बात होनी चाहिए कि जो हम बच्चों को सिखा सकें। जैसे कि इन्होंने अपनी ड्यूटीज बताई, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज हैं उसमें एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की भी ड्यूटी है, आर्टिकल 51A में। इस तरह इन्होंने और भी आर्टिकल्स की बात की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें डाली गई हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो नागरिक हैं वो इसके प्रति ज्यादा अवेयर नहीं हो पाए हैं। खासतौर से हम आम आदमी को देखते हैं तो वो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के प्रति अवेयर होते हुए भी ये नहीं जानता कि इसे क्या करना चाहिए। तो इसको आम जनसाधारण तक पहुंचाने की जरूरत है। लास्ट जो पेपर है वो है रश्मि रणदेव जी का। इनका जो है फिलॉसफी ऑफ नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी इन व्यू ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इन्होंने काफी अच्छा पेपर प्रेजेंट किया, और इन्होंने बात की है रिलेशन ऑफ नेचर एंड फिलॉसफी की, कि फिलॉसफी ऑफ नेचर जो है और जो हमारी एनवायरनमेंट है उसकी बात की। तो फिलॉसफी ऑफ नेचर क्या है ये इन्होंने बताया, और फिलॉसफी ऑफ नेचर में जो हार्मनी, बैलेंस और इंटरकनेक्टेडनेस की बात की जाती है वो इन्होंने बताया कि सभी जो नॉलेज सिस्टम्स हैं हमारे वो भी इसी की बात करते हैं। तो मैन जो है, मनुष्य जो है वो प्रकृति का एक हिस्सा है, और उसको प्रकृति के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। और प्रकृति का जो नेचुरल एक सामंजस्य है, एक प्राकृतिक सामंजस्य है, और चीजों का जो आपस में संबंध है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम एक तरफा होके चलेंगे तो हमारा पर्यावरण और खराब होता चला जाएगा। तो इसके लिए स्वाध्याय की इन्होंने बात की। इन्होंने जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं मेन, वो है कि चिपकू मूवमेंट जो है उसने काफी फायदा पहुंचाया, काफी अवेयरनेस लाने की कोशिश की। और दूसरा जो रिसेंट ईयर्स में अभी चल रहा है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हम जो किसानों के कर्जे को भी कम कर सकते हैं और किसानों की इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसानों का जो मेन मुद्दा है वो है कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, खेत में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण से कि उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये काफी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। इसमें ये होता है कि हम खाद पर और मशीनरी पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और एक नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हैं, जिसमें कि बीज भी किसान का अपना होता है और जो खाद है वो भी वो अपने गाय के गोबर से बनाता है और उसमें वो ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग नहीं करता है, तो जिससे खर्चा उसका काफी कम हो जाता है और धीरे धीरे जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भी आज की बहुत बड़ी जरूरत है कि केमिकल्स डालने से ही पृथ्वी का जो पानी सोखने की जो क्षमता है वो कम हो रही है और उसी से बाढ़ आ रही है, क्योंकि पानी धरती के अंदर नहीं जा रहा। तो ये अपरिग्रह की ओर ले जाता है, इन्होंने एक होता है। और तीसरी चीज इन्होंने जो बताई है वो है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो एलोपैथी मेडिसिन की बजाय हमारे को एक होलिस्टिक हेल्थ दे सकती हैं और हमें एक सस्टेनेबिलिटी दे सकती हैं। तो क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो नेचुरल चीजों से बनती हैं और होलिस्टिक हेल्थ की तरफ उनका नजरिया रहता है, जबकि एलोपैथी मेडिसिन जो है सिर्फ सिम्टम्स को थोड़ा कम कर देती हैं, लेकिन उससे बीमारी खत्म नहीं होती। तो हम अगर इन चीजों को अपने जीवन में लाते हैं, इन्होंने और भी काफी इंटरेस्टिंग बातें की थी, तो इनका पेपर भी बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज के सभी पेपर्स में हमने हमारा जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण है उसको वापस लाने की ही बात मेनली की गई है। तो हमें अपने वेदों से, अपने उपनिषदों पुराणों से, हमारे महाभारत और रामायण और हमारा जो षड दर्शन है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा, अद्वैत वेदांत, इन सब से सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें प्रकृति के साथ जुड़ के चलना है, प्रकृति को अपने से अलग नहीं मानना है। ये संसार जो है हम उसका एक हिस्सा है, हम बाकी प्राणियों से थोड़े समझदार हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही नया करना चाहिए जितना कि जिससे सामंजस्य खराब नहीं। प्रकृति का हमारा जो संबंध है वो एक तरह से ऐसा है जैसे कि माता और पुत्र का होता है। तो हम पृथ्वी से ही सब कुछ ले रहे हैं, पृथ्वी से ही हम हर चीज ले रहे हैं, तो हमें उसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हम उसी की उपज हैं और मरने के बाद भी हमने पृथ्वी में ही वापस जाना। तो इसलिए हमें पृथ्वी को माता मानते हुए और बाकी सारे एलिमेंट्स को भी अपना संरक्षक मानते हुए उन सबके साथ चलना है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस दृष्टि में हमारा जो भारतीय दर्शन है वो सारा का सारा इन्हीं चीजों की बात करता है, चाहे वो योग दर्शन हो जिसमें हम चित्त वृत्ति निरोध की बात करते हैं कि अपनी जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको थोड़ा कम करें, हमारे जो इच्छाएं हैं उनको भी थोड़ा कम करें, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सकें जिसमें हम शुद्धता हो, जिसमें बैलेंस हो और जिसमें हम बाकी सारे प्राणियों के साथ जुड़ के चलें, उनका हार्म नहीं होना चाहिए। हम उतना ही लें जितना कि किसी का नुकसान नहीं हो। हम किसी पेड़ से कुछ तोड़ते हैं तो ये नहीं कि पेड़ को पूरा ध्वस्त कर दें। हमारे यहाँ पहले हर एक पेड़ की पूजा की जाती थी, हर एक पशु पक्षी की पूजा की जाती थी। अभी भी ये है कॉन्सेप्ट, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब हम उनको पूजनीय मानेंगे तो नेचुरली हम उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हुए उनसे कुछ भी मांगेंगे तो वो देंगे, लेकिन छीनना नहीं है। तो इस तरीके से हम ये काफी अच्छा सेशन रहा और आने वाले सेशंस में भी इस तरह की बातें सारी आएंगी और ये हम जन साधारण तक ये बात पहुंचे तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिलॉसफी के सभी लोगों को तो ये बातें मालूम हैं। दीप्ति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और ICPR का और आपके कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू मैडम। धन्यवाद मैम।
आपने प्रस्तुत विषय पर जो तथ्य रखे वे निश्चित रूप से प्रेरणा सभर और गंभीर दृष्टि डालने योग्य है। वेदों पुराणों की बातें, प्रकृति की बातें, पेड़ पौधे पशु पक्षी से संबंधित हमारी प्राचीन धारणाएं जिनको हम भूलते जा रहे थे, उनको दोबारा स्मरण करवाने के लिए धन्यवाद आपका और सभी प्रतिभागियों का। सभी के पेपर बहुत ही अच्छे थे, अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर लिखे गए थे। मैडम, आपने हमें अभूतपूर्व जानकारी से अपूरित किया और आपने सूक्ष्म दृष्टि विषय पर डाली और नए नए आयाम प्रदान किए। आपके सरल शब्दों में बहुत ही समीचीन, सारगर्भित और उपयोगी व्याख्यान द्वारा हमें आपके विचारों की गंगा में अवगहन करके बहुत अधिक आनंद प्राप्त हुआ। आपने हमें अपना समय देकर हमारा मान बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं दूसरे तकनीकी सत्र की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आप सभी ने प्रस्तुत सत्र में उपस्थित होकर गौरव बढ़ाया है, इसके लिए आप सभी की हार्दिक आभारी हूँ। नमस्कार। आशा करती हूँ कि भविष्य में फिर से हम सभी जुड़ेंगे। प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कि हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हो गया है, कृपया वो लिंक ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।